So, good morning to one and all present here, and welcome to the IPR Awareness Program organized by BL Amlani College of Commerce and Economics and Aman Athwani College of Arts. Today, we have with us a renowned speaker, Mr. Jatin Darve. He is examiner of patents and design and resource persons for NIPM. So, we wholeheartedly welcome you to our program and thank you for your support which you had rendered us. One prompting students I would like to tell you is we just had a meeting last week and today sir is here with us. So this is the level of efforts what the Ministry of NIPM is taking with them. This program is jointly conducted by Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Sir, our is a women's institution which started from 2009. Myself, Dr. Jitendra Airkar, I am the principal of this college. And we are catering commerce college as well as arts college. We also have a banking and finance department in the college and postgraduate studies in e-commerce, management, advanced accountancy, and banking and finance. Over to you, sir. Thank you very much, Principal Sir. It's really an honor to be, delivering a webinar on intellectual property rights under National Intellectual Property Awareness Mission. Hello, everyone. As Principal Sir has gracefully introduced me, we shall get to the topic right now. One more thing I would like to ask every participant that let's keep this webinar more dynamic. So whenever any doubt comes up, please let me know so that it's not just one-way communication. Okay. So when we see the title, Intellectual Property Rights, so it actually brings us to a general conclusion that the property created through the creativities or innovative creation of our mind, and rights obviously they pertain to the rules and the laws relating to the intellectual property created by your mind. Basically, these are the types of properties which are intangible, and it can be actually correlated with the other properties like land and gold. So what we will be doing here is just basics. We will be covering basics of intellectual property rights and how they could help you in your future endeavor. So just as I mentioned, creation of mind. Okay, right? So when we talk about intellect, it's all about innovative ideas, anything relating to edible products or literacy, literary work, or traditional knowledge, symbols, slogans, anything which comes out of your mind. They actually benefit you. It actually provides you incentives for your creations. You get due recognition for your creation. Also, the intellectual property rights, once granted to you, create the genuine product supply. Just hold on a second. I have a call.
Okay, sorry about that. So these intellectual properties are categorized and covered under patents and designs, geographical indication, copyrights, trademarks, and semiconductor integrated circuits layout design. And they fall under the category of IPR. These rights actually provide you exclusive rights or monopoly rights so that the owner, the applicant, has the sole rights of making these intellectual property related products or processes, using them, selling or importing in the country. So let's see what patents are. Is it okay if I use Hindi along with English, principal sir? Yes, sir, it will be comfortable. Okay. So आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप लोग मतलब कोई छोटे बच्चे को यू नो लाइक लेस देन 1 ईयर ओल्ड नहाने के लिए ले जाते हैं, तो जब भी उनके मुंह पर फेस पर पानी आता है तो वो यू नो इंस्टेंटली रोना स्टार्ट कर देते हैं. रेस्ट ऑफ द बॉडी आप उनको कैसे भी बेथ करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो दैट प्रॉब्लम was solved by some inventor by inventing baby shower cap. What it does is simple mechanism. ये बेबी के फेस को गीला नहीं होने देता और इसकी वजह से जो उसको नहला रहा है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती. So are you seeing a problem and solution approach? Well, I have another question. Since this is a ladies college, I guess most of the participants are you know familiar with this kind of product. So what was the most famous or most sought out product for girls? Toys mein? Can anybody answer? Okay. So the most sought out, product is doll, specifically Barbie doll. If you can see, this product actually dates back. The product patent actually dates back to 1959. You are seeing here various drawings, like her footwear, her standing platform, the protrusions, which are holding that toy with the platform. So it's complete setup. It's a complete system which has been granted a patent, and this patent later is used for marketing the product. So ऐसे पेटेंट्स में क्या होता है कि जब कोई ऐसे डॉल्स वगैरह डेवलप करता है जिनको पेटेंट ग्रांट होता है, तो एक्सक्लूसिवली वो ओनर बन जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मार्केटिंग. दूसरा कोई भी पर्सन उसको कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड पेटेंट. तो जो भी बेनिफिट है, जो भी प्रॉफिट है, वो उस क्रिएटर के पास रहेगा. सो नेक्स्ट वन, इनवैलिड बेड. तो हर किसी के घर में बेड्स हैं, राइट? बट दिस इन्वेंटर इन 1881 थॉट ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ बेड with a lot of settings. You can create various kinds of configuration. तो इस बेड को आप एज ए चेयर भी यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सोफा या फिर काउच की तरह भी यूज कर सकते हैं, और एज अ बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बाइसिकल. दिस पेटेंट डेट्स बैक टू 1890. सो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेटेंट्स अप्लाई करना या फिर पेटेंट्स क्रिएट करना, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस. आपका कोई भी डे टू डे चीज हो सकता है जो जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, अदर पीपल्स आर आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम, एंड यू कम अप विद अ सॉल्यूशन व्हिच सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम. सो अगर आप patents.google.com में सर्च करेंगे टाइटल और
ब्रैकेट में डालेंगे बेड. So you can see actually there are tens of thousands of patent applications which are applied, which are granted. So what I'm trying to say here, that anybody without any technical qualification can create a patent, can create an invention and get a patent for their creation, right? So can anybody tell me what this is? Principal sir, can you unmute participants if they are interested to, participate in conversation? Yes, sir. They can unmute themselves. Okay. Anybody want to answer what this product is? It's pencil. It's a pencil, correct. What about this one? What is the difference between these two pencils? Second one is covered pencil. Second one is covered. It has a gripping mechanism, right? So basically, first pencil जो हमने नाम दिया है उसे A and A1, इसमें आपको टेक्निकल एडवांसमेंट दिख रही है कि यहाँ पे एक ग्रिपिंग मैकेनिज्म है. ओके, सो जो प्रॉब्लम था वो सिंपल पेंसिल के साथ, दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रिपिंग मैकेनिज्म. सो ये एक पेटेंटेबल इन्वेंशन है, राइट? सेकेंड इन्वेंटर ने सोचा कि क्यों ना इसमें इरेजर ऐड किया जाए, राइट? सो इट बिकम्स एन इन्वेंशन. फोर्थ वन, इसने एक मॉड्यूलर पेंसिल बनाया. जैसे ही ये छोटा सा मॉड्यूल खत्म हो जाता है, आप लोग दूसरा मॉड्यूल इंसर्ट करके पेंसिल को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते. ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है ये डे टू डे बेसिस पे आपने कहीं ना कहीं नोटिस किए होंगे. कलरफुल पेंसिल्स, राइट? या फिर मैकेनिकल पेंसिल्स. सो हु इज दिस मैन? Michael Jackson. Michael Jackson. What is he performing? Sorry, sir. What is he performing? He's performing a dance move, right? It's about 45 to 50 degree angle leaning. क्या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये मूव या फिर ये इल्यूजन क्रिएट कर सकता है? No. No, not until and unless you have some kind of technical help. Actually, Michael Jackson, although he didn't had any technical degree, इनके जो शूज है, उन्होंने शू सोल में ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि जो आप एक ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उस पे वो हुक कर सके और हुक करके इल्यूजन परफॉर्म कर सके. सो जो मैंने पहले बोला था कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर क्रिएटिंग इनोवेशंस, इन्वेंशंस और फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट ग्रांट इज नॉट नेसेसरी. The only persons who require technical knowledge or technical qualifications are us, like us, who are the examiner of patents or controller of patents, and the patent agents who practice before intellectual property of India office. Okay. So next is processing. चाय बनाने का प्रोसेस कोई बता सकता है? Can somebody help me out? It's water. Yes. Tea powder. Yes, tea powder, Milk. sugar. If anybody is interested, they can add milk. Somebody can add, cinnamon. So basically, आप पहले water boil कर लेते हैं, right? उसके बाद चाय पत्ती डालते हैं, बाद में sugar, बाद में milk. So अगर कोई innovator है, थोड़ा सा creative mind का person है, अगर इसने process features जो है, suppose आप 100 या फिर 120 पे पहले प्रोसेस करते थे, सेकेंड वन आया वो सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस कर रहा है चाय बनाने का, सपोज लेट्स हाइपोथेटिकल. तो एक्चुअली इसमें आपको एक टेक्निकल एडवांटेज मिल गया कि आप लोअर टेम्परेचर पे प्रोसेस कर पा रहे हो, आपका गैस कम लग रहा है. सो बेसिकली आपको कॉस्टिंग का बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो
सेकेंड पर्सन जिसने 80 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेसिंग के फीचर्स डेवलप किए, ही इज एलिजिबल टू गेट पेटेंट ग्रांट। सिमिलरली इवन आपके जो ट्रेडिशनल स्वीट्स है या फिर पिकल्स है या फिर कोई मेडिसिन या फिर हर्बल कॉम्पोजिशन है जो कि पहले नोन नहीं थे, जिसमें टेक्निकल एडवांसमेंट किए गए हैं ओवर दी नोन processes, that process, the developed process is eligible to be patented. Patents का term India and most of the countries में 20 years का है from the date of filing, first filing. और ये जो ग्रांट मिलता है आपको फुल एंड पर्टिकुलर डिस्क्लोजर, आपको सारे के सारे पैरामीटर्स जो भी पेटेंट के लिए या फिर जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस है आपने जो डेवलप की है वो आपको पेटेंट ऑफिस के सामने डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके एक्सचेंज में आपको ग्रांट मिलता है। ओके, एंड लेट मी रिमाइंड यू, दीज आर टेरिटोरियल राइट्स, मतलब आपने इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, आपको इंडिया में ही राइट्स मिलेंगे। Same rights won't be enforceable in any other country until and unless you file in that country. Okay, but nowadays due to internet and heavy usage of internet, you have another benefit कि even if you don't file in another country, तो उनके डेटाबेस में जो भी सर्चिंग डेटाबेस है, उस डेटाबेस में जब वो सर्च करेंगे और अपना इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन अगर वहां पे उनको मिल गया, तो वहां पे कोई पेटेंट क्लेम नहीं कर सकता, बट इन अनदर कंट्री दे कैन डेफिनेटली यूज योर पेटेंट टू क्रिएट द मार्केट। सो आपको अगर अदर कंट्री में या फिर जो भी आपकी टारगेटेड कंट्री रहेगी वहां पे अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो वहां पे आपको पहले थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि वहां पे मार्केट कैसा है, क्या है, उस हिसाब से को फाइल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, पेटेंट्स आर मोनोपोली राइट्स विच आर ग्रांटेड बाय सोवरेन और स्टेट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, जैसे 20 years इन इंडिया, ग्रांटेड इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर, और राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। पेटेंट डेटाबेसेस, अभी इंटरनेट की वजह से आपके पास ये 4 बेस्ट डेटाबेसेस है अवेलेबल। गूगल पेटेंट्स, second one is our homegrown product, that is InPass, third one is WIPO's PatentScope, and fourth one is eSpaceNet. So let's talk about designs. Can anybody tell me what is the distinction between these two ducks? Anyone? Sorry, sir. What is the difference between these two ducks? First one have wheels and second one is no wheels. Yes, they do not have wheels. The second one, on its front side, has some sort of, musical buttons. The first one does it. First one appears to be more like 2D shaped article. Okay. And second one appears to be a 3-dimensional product. So ये इतना easy है कि आप आंखों से देख के distinction कर सकते हैं, right? This one is configuration of pool balls. So basically अगर ये configuration आप change करते हैं, ये color scheme जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो change करते हैं, तो that is eligible to get a designs registration. Similarly, even आपके earring या फिर कोई भी ऐसा particular pattern कहीं पे भी जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप solely अपनी आंखों से जज कर सकते हैं। ये सपोज फैब्रिक का पैटर्न है, अभी आप यहाँ पे जो मार्क किया है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, अगर इसमें किसी ने थोड़ा सा भी पैटर्न में चेंज कर दिया, इन केस ये जो टेट्राहेड्रल पैटर्न है इसको किसी ने अगर सर्कल में चेंज कर दिया, तो बेसिकली यू कैन जस्ट जज बाय द आई, राइट, कि पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो दैट different developed pattern, that another pattern is eligible to get a design grant. Similarly, even आपके विंडो पेन पे जो डिजाइन रहेगा वो भी क्वालिफाइड है।
these glasses, they have different shapes. They can be distinguished by your eyes. So they are eligible to be, registered under designs. So now another question. What is the difference between these four, pets or toys? There are different type of glasses. Sorry. Hello. Am I audible? Yes. So basically, even though the shapes and the configuration of these toys are same, the design, the color scheme on these toys are different. So each of the product can be, registered under Design Act separately. तो जैसे कि मैंने पहले बोला, डिजाइंस जिसके फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन जो है, किसी भी आप आर्टिकल्स को अप्लाई कर सकते हैं और वो आप अपनी आंखों से जज कर सकते हैं, राइट? तो उस डिस्टिंक्शन के बेसिस पे आप कोई भी डिजाइन रजिस्टर कर सकते हैं. सो टर्म फॉर डिजाइंस इज जनरली 10 years, जिसको आप 5 years के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं. Okay, now let's talk about trademarks. What comes in your mind when you see Oral-B or Tanishq or Apple's logo? क्या ज़हन में आता है? Toothpaste, toothbrush. Yes, oral hygiene products, right? जब आप तनिष्क देखते हैं, ज्वेलरी, करेक्ट. एप्पल का लोगो देखने के बाद क्या आता है? एप्पल मोबाइल फोन, आईफोन्स, मैकबुक्स, राइट? What about this swoosh mark? It's a Nike logo, right? Sportswear, correct. So basically जब हम ये लोगोस देखते हैं तो हम लोग instantly मतलब ये सोचते हैं कि yes, this is related to oral hygiene. Oh, this is related to jewelry. This is related to electronic products, right? और ये Nike जो which is related to sportswear. What about this logo? McDonald. Yes. What do they provide? Burger, French fries. Correct. Mostly fast food, right? What about this one? Pizza Hut, right? Pizza Hut क्या provide करता है? Various types of pizzas, right? Domino's, they also provide various types of pizzas. So mostly these are fast food manufacturers and sellers, right? What about this one? TCS. सबसे पहले क्या आता है? जैसे TCS का लोगो देखते हैं हम लोग, क्या आता है हमारे दिमाग में? What do we think about Flipkart, Amazon? FedEx or Indian Post? So basically TCS is nothing but a software and allied products and services provider, right? Flipkart and Amazon, they are e-commerce websites. They also ship your products to home. Indian Post and FedEx, they are delivery services. So trademarks, we can define it as a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other, right? Just by logo देख के हम लोग मतलब पता कर लेते, जज कर लेते कि oh, this particular services or particular products goes to this company. ये company manufacturer है, ये company service provider, correct? So similarly,
ट्रेडमार्क का जो टर्म होता है वो इंडेफिनिट है, बट इसका रजिस्ट्रेशन हर 10 साल में आपका रिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल सीज टू एग्जिस्ट और कोई अदर क्लेम कर सकता है और यूज कर सकता है उसकी प्रोडक्ट सेल और ये करने के लिए, मार्केट करने के लिए. So this is the type how you represent your trademark. So when you see TM, it means whether either you have applied for trademark or you haven't. And when you see the R mark, it means your trademark has been registered. Okay, what is this product? Please help me out here. We have very short time. Please help me out here. It's a Mysore sandal soap, right? What is this monument? No one? So Taj Mahal. Correct. What is this monument? Statue of Unity, right? What about these? Apple tree. Yes, mostly Shimla or Himachali apples, right? ये तो सबको पता ही होगा. Gateway of India. Yes, thank you. Charminar. Thank you very much. India Gate from Delhi. Red Fort of Delhi. Lal Killa. Can anybody help me out, identifying this product? ये चादर है महाराष्ट्र के एक लोकेशन से, बहुत फेमस चादर है. कौन सी चादर फेमस है महाराष्ट्र से? सबसे ज्यादा फेमस. सोलापुर चादर का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. What about these towels? These are terry towels, right? These also belongs to Solapur community. What about these? This pagdi? Does anybody recall where it is from? Maharashtra. Right? Okay, it's a Puneri pagdi. Can anybody tell me which area is famous for grapes? Nasik. Vineyards and wine. Sula wine का नाम तो सुना होगा. It is also from Nasik region. The grapes, they are from Nasik, and the wine, which is extensively made from grapes from Nasik, these wines are known as Nashik Valley wine. What about sari? This sari is most famous from Maharashtra region. Can anybody tell me? It's a Paithani sari. Okay. So which area is famous for strawberries in Maharashtra? Bhubaneswar. Correct. Thank you. What about these paintings? Anyone familiar with these paintings?
These paintings are called as Warli paintings. These are created by tribal peoples from Maharashtra and Gujarat border. What about the jaggery? Which area is famous for jaggery in Maharashtra? No? So Kolhapur is famous for jaggery production. What about the oranges? Which oranges are famous from Maharashtra? Okay, so Nagpur oranges. Can anybody tell me which region is famous for harvesting and manufacturing kokum? Okay, Sindhudurga and Ratnagiri. So basically, what information we were retrieving from these slides is that these products, these monuments, or that artistic work, that is Warli painting, has that they come from a particular geographical location. Apart from that geographical location, you won't find these edible products or even paintings or any monuments. So geographical indication को हम लोग कैसे describe करेंगे कि a name or sign used on a product, right, which corresponds to a particular geographical location or origin. So geographical indications का भी term है, वो भी indefinite है, but और 10 साल के बाद आपको उसको register करना पड़ेगा. Geographical indication cannot be registered by a single person. It has to be registered by a particular community, which has exclusive rights to that, let's say, edible product, या फिर artistic work like Warli paintings, so that the whole community gets benefited. So these are the other GIs of Maharashtra, like Lasalgaon onion, Mengurla's cashew, Wagaya's Gewada, Ghansal rice, Mangalwada jowar, raisins, Sangli ke raisins, Beed ke custard apple, Jalgaon ke brinjals, Solapur ke pomegranate, Jalgaon banana, Marathwada ka kesar mango. Okay, so you can visit ipindia.nic.in for any of your queries related to patents, design, trademarks, or geographical indication. The page will redirect you to that particular website. You can also attend online or offline training sessions. You just have to visit RGNIPM website. So let's watch another video. Okay, I'm sorry to say it's not playing at the moment. There is some problem, so we will skip it. Next slide. So we will discuss about copyrights. This is a selfie which was taken by this mammal, which is known as a black ape. He is a native to Indonesian forest. ये एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मिस्टर डेविड स्लेटर, he is a wildlife photographer. He went to Indonesia to capture some photographs and to document these apes. But उन्होंने थोड़ा सा जब इधर उधर पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ये बहुत ही बदमाश और खतरनाक किस्म के apes है.
तो उन्होंने क्या किया कि कैमरा ट्रैप सेटअप किया, रिमोट कंट्रोल्स वगैरह वहां पे सेटअप कर दिए और वो वहां से चले गए। सो बेसिकली जब ये लोग आए वहां पे तो ये छेड़खानी करने लगे और छेड़खानी करते करते ये एप ने रिमोट कंट्रोल यूज करके एक सेल्फी खींच ली। सो दिस फोटो वाज वेरी फेमस। तो ये फोटो विकिमीडिया कॉमन्स ने यूज किया था अपनी पब्लिक शेयरिंग वेबसाइट। तो जैसे ही डेविड स्लेटर को पता चला कि ये फ्रीली यूज हो रहा है पब्लिक डोमेन में, सो उन्होंने विकिमीडिया कॉमन्स पे केस किया यूएस में, saying that it's his copyright and they cannot use it without his legal consent, without any financial benefit to David Slater. But later क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि actually photo wasn't taken by David Slater. Okay, even if it was his hardware, the photo was taken by the ape. So जो डेविड स्लेटर जो कॉपीराइट का क्लेम कर रहे थे, ही इज नॉट एलिजिबल गेट टू एनी प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो उनका क्लेम तो खारिज किया गया। तो फिर पीटा ने सोचा कि चलो अगर डेविड स्लेटर को नहीं मिल रहा है कॉपीराइट, तो लेट्स गेट द कॉपीराइट रजिस्टर्ड अंडर द ब्लैक एप्स, सो दैट जो भी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा, जो भी कमर्शियलाइजेशन होगा, ये इस इमेज पे तो इस एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव करने के लिए यूज किया जाएगा। पीटा भी चले गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जनरल वर्डिक्ट दिया कि कॉपीराइट एक्ट डज नॉट कवर एनिमल्स अदर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस are only parties eligible to get a copyright register. Okay. So copyright के अंडर different sections है जो protection provide करते हैं. First one is literary work like books, speeches, manuals or journal papers. Second is music, lyrics. Third one is painting, poster making. Fourth one is movies, dramas, audiovisual content. Fifth one is singing, songs. And sixth one is programming, mostly computer codes and related database products. So I would like to Principal Sir to participate in a small conversation. Principal Sir. Sir is busy with some other work. Okay, can I talk to someone else who has published any research papers recently? Sir, presently all teachers are engaged with their lectures. Right now? Yeah, sir, they are engaged with their lectures. I was told that there are no lectures after 9 o'clock. No, ma'am. No, sir. Exactly 2 classes we have allotted for the webinar, and the other classes they are engaged with. Okay. Yeah. So basically copyright का concept क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने ब्लैक एप का केस देखा, राइट? तो जो क्रिएटर होता है, ह्यूमन और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, बस उन्हीं को कॉपीराइट एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि whoever creates प्रोडक्ट और मिलिटर कॉपीराइट एक्ट, तो उनका जो जर्नल पेपर वगैरह होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी हु ओन्स दैट जर्नल पेपर? इज इट ऑथर और द पब्लिशिंग हाउस? एनीवन? Sir, the researcher, right? बेसिकली जब आप पब्लिश करते हैं पेपर इन एनी पब्लिकेशन हाउस, लेट्स से नेचर वगैरह हो गया, तो आपका और उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन होता है कि
Once you submit to them, the right of reproduction, copying, and every right relating to that particular paper, you actually relinquish it over to the publishing house. So basically what I'm trying to say, even if you want to, give it to your friend without the consent of publication house, without paying any fees to publication house, you cannot do it. So under Copyright Act, there are 3 bodies. First one is Copyright Office, which actually registers copyright products. मतलब कोई भी copyrightable product जो होता है. They also keep record. Mostly it's a quasi-judicial function. Second one is Copyright Board, and third one is Copyright Society. So we will see directly what Copyright Board does. Copyright Board का काम होता है कि जो भी dispute create होता है किसी भी 2 parties में relating to assignment या फिर license या फिर कोई unpublished work वगैरह होगा, तो वो rectify करना होता है. तो उसके रिगार्डिंग जो भी हियरिंग्स वगैरह होती है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर रजिस्ट्रार कंडक्ट करती है. थर्ड वन, कॉपीराइट सोसाइटीज. These are actually voluntarily registered association, but they fall under Copyright Act 1957. Okay, तो कॉपीराइट सोसाइटीज का क्या काम क्या है? ये एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी रॉयल्टीज कलेक्शन वगैरह होता है तो दे हेल्प इन कलेक्टिंग दोज रॉयल्टीज. दे आल्सो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आउटसाइड इंडिया टू द क्रिएटर्स और अदर पीपल्स. तो टर्म्स ऑफ कॉपीराइट, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 60 years का. बट इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन till the death of the author, and after death of the author you get another 60 years. Okay, rest of the cases में 60 years from the date of creation. Now semiconductor integrated circuits layout and designs. Okay, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, just like designs, but it has been completely separated. तो सेमीकंडक्टर का जो भी डिजाइन रहेगा, it should be original to get this grant. It should not be exploited commercially anywhere in India or कोई भी जो expansion country है. Okay, और इसका inherently distinct होना चाहिए. ओके, तो इसका भी जो टर्म है वो 10 साल का. So we will see what traditional knowledge is. Can anybody tell me what you do? घरेलू उपचार में आप क्या करते हो जब आप इंज्योर हो जाते हो, छोटी मोटी जख्म होती है तो आप लोग क्या करते हो? बैंडेज. बैंडेज. अगर बैंडेज नहीं है तो हल्दी लगा लेते हैं, करेक्ट? छोटा मोटा स्क्रैच आ गया, स्क्रैच पे हल्दी लगा लो. सो कोई बता सकता है कि ये हल्दी यूज करने का या फिर दूध में हल्दी डाल के इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब किसने बताया आपको? कहाँ से मतलब ये नॉलेज पास हुआ या फिर कहाँ से नॉलेज आया? दादी नानी से. सॉरी, दादी नानी से. मतलब ये बेसिकली एक टाइप का ट्रेडिशनल नॉलेज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है, करेक्ट? सो इसी प्रकार से आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी नॉलेज विदाउट मे बी कोई रिटर्न नहीं है या फिर पब्लिक डोमेन में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है बट लोगों को पता है, तो ऐसी जो नॉलेज होती है वो कवर होती है ट्रेडिशनल नॉलेज में.
तो ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए एक सेपरेट डेटाबेस है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम लोग अभी देखेंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल फर्स्ट है, अगर कोई पेटेंट्स में क्लेम करता है कोई एक्सट्रैक्ट्स या फिर अल्कलॉइड्स या फिर कोई आइसोलेट करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, जो कि पहले से पता है कि इस प्लांट में ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, तो बेसिकली वो पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगा एज अ पेटेंट। सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होगा कि कुछ लोग मतलब सर्दी खांसी के लिए घर में काढ़ा बना के पीते हैं, राइट, जिसमें वो यूज करते हैं हल्दी या फिर गुड़ यूज करते हैं, या फिर ब्लैक पेपर का पाउडर वगैरह यूज करते हैं, उसको बॉईल करके यूज करते हैं। सो सिमिलरली अगर कोई पर्सन पेटेंट एप्लीकेशन में ये क्लेम करता है कि मल्टीपल जो प्लांट्स है या फिर उनके छोटे मोटे एक्सट्रैक्ट्स है जो हमको पता है कि सेपरेटली अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर डिसीज पे या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली ये ऑब्वियस कॉम्बिनेशन हो जाता है और वो ग्रांट नहीं होता। गाइडिंग प्रिंसिपल 3 ये बोलता है कि जो इंग्रेडिएंट्स है जो ऑलरेडी नोन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, तो वो एक्चुअली प्रिजम्पशन क्रिएट कर देता है कि ऑब्वियस है ये ऑलरेडी नोन है, जो अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लेम कर रहा है तो वो भी पेटेंट नहीं होगा। सो आप अभी ये सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेट्स रिकैप सम थिंग्स। तो ये एक ही प्रोडक्ट में इतनी सारी आईपीज या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। आप ये जो लोगो देख रहे हो, ये लोगो कवर होता है ट्रेडमार्क में, राइट। ये बॉडी देख रहे हो डिजाइन, ये जो डिजाइन लैंग्वेज है एप्पल का वो फॉल होता है डिजाइन्स में। इसका एलईडी डिस्प्ले पर्टिकुलर सेट होता है जो कीबोर्ड है और अदर पार्ट्स है इंटरनल पार्ट्स, वो पेटेंट्स के अंडर फॉल होते हैं। इसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, वो यूजर मैनुअल कोई भी सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। और जो मदरबोर्ड होता है वो SICLD के अंडर रजिस्टर्ड है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। So let's take a quiz. कोई बताएगा पेंटर्स या फिर आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनका जो क्रिएशन है वो कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर प्रोटेक्ट होगा? हेलो, am I audible? Am I audible there? Yes, sir, you are. Okay, so can anybody answer me? What protects the intellectual property created by artists or painter? Registered designs. I said painter. It falls under copyright. So, what protects the intellectual property created by designers? Trademark. It's actually registered designs. What protects the intellectual property created by inventors? It's trademark. Sorry? Patent. Patents, correct. Which of these
is a geographical indication. BMW, Champagne, Wingurla Cashew, PlayStation, or www. World Wide Worldwide. Web. World Wide Web. What about Champagne? I guess geographical indication आपको समझ में आया क्या? What is geographical indication? Okay, A the name answer or is sign. Wingurla Cashew. Yes, Shivali. A name or sign which select which. हाँ हाँ चलेगा, हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, Shivali. बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है, राइट, जो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन से है, इस पर्टिकुलर सिटी या इस पर्टिकुलर टाउन या फिर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है. ओके, सो व्हाट डज इट ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? An invention. Trademark. Trademark. Sorry, sir. A trademark. What does a trademark protects? Brand names. Brand names. Okay, correct. So basically in options में से क्या आएगा? An invention, a work of art, logos, names and brands, the look, shape and feel of a product, or a secret formula. Which one? Logos, names, and brand. Correct, ma'am. Thank you. How long does patent usually last for? Patent का term कितने साल का होता है? 10 years. Patent का? We are talking about patents. 40 years. It's actually 20 years. Okay. So if you write an original story, which type of intellectual property right? Intellectual property gives you the right to decide who can make and sell copies of your work. मतलब किस intellectual property के अंदर आपने जो story create की है वो protected होगी. Is it copyright, geographical indication, patents, या registered design, या फिर trademarks? Which one? Copyright. Correct. Okay, suppose एक फुटबॉलर है, let's say बाइचुंग भूतिया, उसने स्पोर्टवेयर बनाया, एक कंपनी ओपन की जिससे वो स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो उस कंपनी का जो नाम रहेगा या फिर कोई लोगो रहेगा, ओके, तो वो किस आईपी के अंडर प्रोटेक्टेड रहेगा?
How do you know iPhones are created by Apple? How do you identify them? Okay, the answer is trademark. So thank you very much. Does anybody have any questions? Thank you, sir. Yeah. Does anyone have any questions? No, sir. सबको समझ में आ गया IPR क्या होता है? These are just the basics, okay? So I don't feel they have any doubt. Okay. So shall we conclude the webinar? Yeah, sir. Yeah. So from the outside, I would like to yes, sir. Yeah. Just a second, sir. Yeah, from the outside, I would like to, on behalf of BL Lamlani College of Commerce and Economics, I would like to thank Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and our eminent speaker, Mr. Suhas Kulkarni, sir, for giving such a wonderful time and enlightening our girls in such a beautiful way. I hope they would benefit with that. Thank you so much, sir, for joining with us. Well. Thank you so much, sir.